Hi all, I welcome you all again to this amazing session of rocketgenie. We were learning about the advanced digital marketing, and this is model 5, which we are learning about the lead generation, and it is part 3. So, continuing with what we learned before, just to grab up, this was the B2C and B2B analytics that we were talking about regarding all over the analysts. If it is related to the awareness, to B2C, how the working is going on, and if it is B2B, so we're catering to a bigger client, bigger audience, and wide number of people at the same time with different interests. So, उनको हम aware कैसे करेंगे? There are multiple strategies that we discussed. Now, related to the B2C, if we talk about the product, so how are we going to build the interest of that product into the person? That was a different way. But again, for the B2B, we are just catering to one whole big segment. So, how it will be impacted, how it will be working out, that was discussed. Now, consideration is related to the reviews. Suppose if there is a customer that you're targeting, and suppose we are just talking about the wedding cards, maybe. So wedding cards का customer depends on their own interest, their own niche, right? कोई कस्टमर आ रहा है कमिंग अप विद द पार्ट कि मेरे को एकदम प्रॉपर हैंड पैक चाहिए, मेरे को एकदम दिखाना है कि इट इज सो प्रीमियम, सो नाइस, सो डेलिकेट एंड ऑल। तो वो उस तरीके से आप अपना एक प्रोडक्ट उसको शोकेस कर सकते हो दैट कैटर्स टू ऑल ऑफ दैट नीड, राइट? नाउ इफ देयर इज अ पर्सन कमिंग अप टू यू कि नो नो आई डोंट वांट दैट हैंड पैक पार्ट, आई जस्ट वांट इट वेरी सिंपल एंड विद लेस बजट, मिनिमम इफेक्ट, तो आप उसको वैसे कंसिडरेशंस के प्रोडक्ट दिखाओगे, and they can check it out all as per your reviews that I mentioned on the your certain Google or your merchant account or your website or anywhere other जहाँ पे आपके reviews visible है. On the alternate, talking about the concentration of B2B, the B2B is more concerned about what type of products or services you're giving at an average with what benefits. So B2B को हम वैसे ही cater करते हैं because brands are more not, very intake about their employees or about their own things. But yes, they are very much concerned by what benefits you're giving. क्योंकि business तो हर कोई दे रहा है. They're watching multiple products of your competitors somewhere or the other. Because people are smart enough to compare. And now, when they're considering you, so they're trying to get some better results. So, as a brand or as a digital marketer, when you promote a certain brand, you must be very well aware कि आपका यूएसपी क्या होना चाहिए. सपोज कि अगर आपका यूएसपी है, इट इज अबाउट 30% ऑफ, 40% ऑफ, या अगर you're working for a travel company, they are telling कि नहीं नहीं, we are just giving you very much good things that are related to all of the benefits, तो हम उस चीज को वैसे दिखाएंगे. बट इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी ब्रांड टू शो इट्स यूएसपी, क्योंकि समटाइम्स इट इज अबाउट द नेम ऑफ दैट ब्रांड और द नेम ऑफ दैट प्रोडक्ट. जैसे नेट हैबिटेट, इफ वी टॉक अबाउट दैट वन फॉर्म, नेट हैबिटेट इज अगेन अ वेरी एफएमसीजी कंपनी that sells about the conditioner, shampoos, hair mask, skin mask, body cream, subs, scrubbers and all. तो मतलब उनका शेल लाइफ इज वेरी शॉर्ट. बट ऑल्टरनेटिव में कोई उनका कॉम्पिटिटर एग्जिस्ट नहीं कर इन द मार्केट बिकॉज नेट हैबिटेट इज एक्चुअली ट्राइंग टू प्रमोट समथिंग वेरी रियल, वेरी क्विक, एंड जो वन टाइम यूज होता है, एंड दे हैव अ गुड पैकेजिंग, दे हैव देयर ओन सेटअप एंड एवरीथिंग, राइट? उनका कंसिडरेशन एक ब्रांड तभी करेगा या एक कंज्यूमर तभी करेगा व्हेन ही इज वेरी क्लियर अबाउट द आइडिया एंड हिज ओन डिमांड्स. तो वो रिव्यूज एंड रिटर्न्स खाली एक बार चेक करेगा, लाइक व्हाट इज द थिंग दे आर ट्राइंग टू प्रोवाइड विद व्हाट बेनिफिट्स एंड सप्लाईज, एंड ही इज गोइंग टू गेट इट. कंसिडरेशन उधर मतलब होगा, बट नॉट एट द वेरी पीक लेवल, क्योंकि उनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है स्टिल एग्जिस्टिंग इन द इंडियन मार्केट ऑन दैट स्केल, राइट? इंटेंट की बात करें, सो अगेन इट इज अबाउट द प्रोडक्ट कि हम प्रोडक्ट को कैसे शोकेस कर रहे हैं, क्या बेनिफिट है, क्या नहीं है. सो एवरीथिंग इज टू बी विजिबल इन दैट सेंस, राइट? नाउ इफ वी टॉक अबाउट द एविल, Email is something that tells about all of the reviews in your cart, and it completely tells about कि अच्छा ठीक है, there is something, some person checking out through PayPal for example. तो आपकी वेबसाइट पे वो पेपाल कैसा काम कर रहा है, एंड हाउ इज इट शोइंग, व्हाट इज द बेनिफिट इट्स गिविंग. अगर मानो कि आपने कुछ परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट लगाया हुआ है, या फिर अगर आपने कोई डिस्काउंट दिया हुआ है. जैसे जब हम एक आपको बैकड्रॉप बताती हूँ फॉर द ब्लिंकिट. व्हेन यू परचेज फ्रॉम ब्लिंकिट, समटाइम्स व्हाट हैपेंड, इट गिव्स यू ऑप्शन कि ठीक है, तो 30% ऑफ, 29% ऑफ है ना. कभी आप मिंत्रा से बाय कर रहे हो, सो इट गिव्स यू दैट डिस्काउंट.
But on the actual side, when you just go for the purchasing or for your card details, so it does not give you that discount. So it is just written, but it is not applicable to it. So this is why there is a different, assumption on that. And people might back out from that option even. कि मतलब review कर दिया, register कर दिया, but you're not trying to give them that sort of discount जो आपने पहले promise करा है और that sort of product जो आपने पहले promise करा है. So they'll back out. And the last step when the customer ends up to is the buy session. मतलब आपका transaction complete हो गया, आपका profits complete हो गया, profits हो गया है, the sales is done, everything is done. So इसके बाद मतलब pre का and post का तो अलग एक company handle करती है. That is not the digital marketing person had it. Okay. He's trying to elevate. But yes, if the company says कि you have to promote it in way कि हम उसको भी deal करते हैं, so you have to promote it as a USP somewhere, right? Now, when we talk about the lead generation, there are different funnels for it, considering to be three one: awareness, consideration, and decisions. So awareness को हम बोलते हैं tofu, ठीक है? If we talk about the tofu, so tofu is more about the build reach via content, SEO, and social media. जो टोफू है ना, इट डज नॉट जस्ट लेट यू नो कि ठीक है एक जो लीड जनरेट हो रहा है फ्रॉम वेयर इट इज या व्हाट पर्सन इज डूइंग इट या फॉर विच कॉन्टिनेंट इज कमिंग फ्रॉम, मतलब खाली इंप्रेशंस व्यूज एनालिटिक्स को छोड़ के it on an average tells you कि जो आपका social media है, even from there, if it is from paid, if it is from organic one, और अगर आपका content से आया है तो आपके कौन से content से आया है, if it is from the SEO, so which part of keyword is striking more जिसकी वजह से आपको awareness मिला है. So this is again a different lead generation funnel जो companies on the very prior, from the startups to the cracks to the pro level, इसको जरूर ही जरूर एनालिटिक में लाते हैं, ठीक है. This tofu, mofu, and bofu is for you, not for the company to explain them कि see this is the tofu level of awareness that we are doing या ये क्या है. Companies are only considered कि उनको जो ये आ रहा है sales वो आ रही है या नहीं आ रही है, first point. Second point, अगर sales आ रही है so कौन से source से आ रही है. Somewhere or the other company is trying to spend some amount, right? अगर मानो I'm a company or there is an X company you're working for and then you see कि that X company is trying to promote something. Promotion उन्होंने 100 रुपए लगाया, 200 रुपए लगाया. It is an amount spent, right? And as per the Indian market, what happens कि 100 रुपए लगाया उनको 1000 रुपए का return चाहिए होता है. But in digital segment, what happens? Starting में you cannot just claim it. Right. Claim is like a very different thing because you're not running the analytics at the start. You are just following the analytics. You're just following the trends. You're just following it all. And when you follow, you lead it somewhere, but you do not start it. So there is a difference, right? Now start कर भी रहे हो या फिर lead कर भी रहे हो. What is the point कि आपको sales कहाँ से आ रही है? If the company is getting the 10x sales without spending 100 rupees, so yes, वो उसके साथ जाना चाहिए. And उनका mindset देख के you have to make your own strategies, your own budget, your own alignment कि मतलब ये मैं working कैसे करूँगा या करूँगी. So अगर मानो कि कंपनी बोल रही है फॉर एग्जाम्पल XYZ नेता है नाम ले ले, ठीक है, सामने बंदा है नेता है. So ये says कि नेता है, you're giving us very nice results, but we are not spending more. You need to give us the same result without spending on ads and everything. So you as a smart person now will play a mindful game with yourself कि ठीक है इनको spend नहीं करना है and इनकी leads फॉलोइंग से आ रही है. फॉर एग्जाम्पल कि सोशल मीडिया से आ रही है वो भी ऑर्गेनिक से. सो नाइस, वी कैन नॉट स्पेंड ऑन द पेड पार्ट मोर. हम खाली अवेयरनेस चलाते हैं, वाई टू स्पेंड ऑन लॉट्स ऑफ लीड्स एंड एवरीथिंग, खाली अगर अवेयरनेस के लिए चाहिए, राइट. अगर मानो यू आर गेटिंग योर via content or traffic from the paid part, for example, अब पेड से आ रहा है but you need to switch it to the free one. So now how you're going to handle that? Now you're going to post up the same blog, same everything through the blog sharing links या पिंक्स करना उसके लिए या कुछ ऐसे सबमिशन करना क्लासिफाइड से रिलेटेड जो आपको फ्री का बेनिफिट दे. But these things are just for 30 days. So this is why you have to be very concentrate and very regular कि वो 30 days के बाद भी सेम ही पोस्टिंग जाए, अलग ना जाए बिल्कुल भी. So this creates a very well awareness, right? See now, if we talk about the tofu, mofu and bofu in very good stream, तो क्या होता है? Tofu is, these terms are like refer to the stages of the sale funnels, ठीक है?
but they do not let you know ki what is the main marketing or what sales categorizing. So this is where tofu means the top of the funnel, mofu means the middle of the funnel, and bofu means the bottom of the funnel. So मतलब एक funnel को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं at the alternate. ठीक है, these funnels are providing you a very basic framework जिसमें you are just getting an idea कि एक organization का start कैसे हो सकता है, what is the detailing, buyer कहाँ पे मिल सकता है आपको, आपका existing target कौन से category में आ सकता है, या फिर जो आपका behavior buyer persona है, या फिर उसका जो भी लाइक ईच स्टेज का एक अपना टैलेंट होता है, टैलेंट इन द सेंस कि आपको अपना ट्रैफिक मिलेगा उधर। एंड व्हेन यू एंड अप ट्राइंग टू एनालाइज कि जो ये मार्केट है आपके उस ब्रांड की कहाँ पे स्टैंड कर रही है, व्हाट इज द सेगमेंटेशंस या आइडेंटिटीज, तो वो सब चीज वैसे दिखना शुरू करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट द टोफू, टोफू में जो भी अवेयरनेस का पार्ट हो रहा है इट इज लाइक वेरी टॉप फनल। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे things are included like the blog postings is included which is very essential again क्योंकि जब तक blog posting नहीं हो रही you are not able to explain your keywords to the customer, right?